Hello friends, welcome back to my channel, the Croshcrush girl. Today I've got an order, or I can say it's a request from my friend. One of my friend wants me to make a crochet bandana for her, and so therefore I have some cotton yarn, yes, cotton yarn. I have some colors and pencil. So yeah, and I gonna use 2.5 mm crochet hook. I can show it on this. This is 2.5 mm crochet hook, and I've searched a lot, but finally I've decided to follow a pattern from Chenda DIY channel. She have a beautiful color palette in her channel. If you are a crocheter, you must visit her channel. That's beautiful and cute and almost pastel in colors. Yeah, so I'm gonna use for this project I'm gonna use pink yarn, pink. Okay. So it is of granny square. Some part of this banana is granny square. Sorry, granny square pattern or granny pattern. Yeah, I'm using this 4-ply cotton yarn. This is 4-ply cotton yarn and 2.5 mm crochet hook as I said. So मुझे एक रिक्वेस्ट आई है मेरी एक फ्रेंड की तरफ से. उसने कहा कि उसे एक क्रोशिया बंदाना चाहिए. तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से किस चैनल से मैं एक बंदाना बनाना सीखा और अब मैं इसको बना रही हूँ. ये बहुत ही इजी पैटर्न है. मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मुझे कोई भी पैटर्न इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट फाइनली मुझे एक चैनल मिला और उस पर एक पैटर्न मिला बंदाना का. ये बहुत ही क्यूट है और बहुत इजी है बनाने में और बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी. तो चैनल का नाम है चेंडा DIY और इसके लिए जो मैंने ये कॉटन यार्न लिया है ये है 4-ply कॉटन यार्न. 7 बज रहे हैं, 7 बजे शाम के 7 बजे मैंने इसे बनाना शुरू किया है. लेट्स सी मैं कितने बजे तक इसको बना के ख़त्म कर सकती हूँ. 2000 years later. An eternity later. शगुन के तौर पे मेरे से एक गलती हो गई और मुझे इसको थोड़ा सा उधेड़ना पड़ेगा. हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है. मैं कुछ भी बनाती हूँ ना उससे मुझे उधेड़ना ही पड़ता है. ये सेंटर में जितने भी आपको गैप्स दिख रहे हैं ना इसमें चेन 3 रखना था और ये प्रीवियस रो में मुझसे सिर्फ चेन 1 रह गया. मुझे ये उधेड़ना पड़ेगा यहाँ तक. दिस वन एंड वन मोर. आई डोंट लाइक इट. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ऐसा उधेड़ना पड़ता है. अब यहाँ चेन 3 बनाना है तब जाके एक बार लुक नाइस. शगुन के तौर पे मैं इसे मानती हूँ कि ये शगुन है मेरे हर बच्चे का. ऐसा हमेशा लगता है. अनरावलिंग इज लाइक important part for me of my any project, whether it's big or it's small. Yeah. और जब कोई कार्डिगन बनाना होता तब तो एकदम ज़्यादा बुरा लगता है बिकॉज मैं ऑलमोस्ट बना ही लेती हूँ पूरा एक पैनल. उसके बाद फिर गलती पता चलती है. जब तक गलती पता चलती है तब तक मैं 3-4 दिन वेस्ट कर चुकी होती हूँ एक ही पैनल बनाने में. फिर मुझे वो पैनल पूरा हटाना पड़ता है, वो देना पड़ता है. तो या थोड़ा सा है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे मेजरमेंट्स करती रहूँ, बट फिर भी हो जाता है जैसे कि अभी होगा. बट मुझे जल्दी पता चल गया. ये एक अच्छी बात है कि जल्दी पता चल जाए और जितना देर से पता चलता है उतना ही देर आप समझ सकते हैं. चेन 3 इसलिए बनाना होता है बिकॉज यहाँ पे ना इस वाले गैप में 2 शेल्स बनाने हैं. 1 इन दिस वन एंड दिस वन. तो 2 शेल जब एक गैप में बनेगी तो ऑब्वियसली उसको उतना स्पेस चाहिए. इसकी वजह से 3 चेन यहाँ पे होने चाहिए. यहाँ पे एक भी चेन नहीं है बिकॉज यहाँ सिर्फ एक शेल बनता है. तो क्या करना होता है. और फिर इसको ना आप ट्रायंगल शेप भी देंगे तो उस हिसाब से भी इधर थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि अपनी शेप बना के रखे. तो करते हैं अगला काम. सो अगेन सेम मिस्टेक मुझे दोबारा रिपीट होने वाली थी. मैं यहाँ फिर चेन 1 करके छोड़ने वाली थी, बट ये दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए मैं इसमें एक रिंग अटैच कर दूँगी. इससे ही खत्म. आई होप मुझसे ये दोबारा मिस्टेक रिपीट ना हो.
इट्स 7:30 नाउ। 7 बजे शुरू किया था, 7:30 बज गए हैं और मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है। I need to make 8 rows only of this and then lacy part start at 9th row. So yeah, I think I can make it in 1.5 hours. 3 hours later. बनाना बन के हो गया है तैयार। ये इधर इनको भी स्यू इन करते हैं। And it's finished. It is beautiful. Let's try it. मैं ट्राई नहीं करूँगी, या मैं ट्राई कर सकती हूँ। I hope she will like it. She definitely likes it. Yes. Okay, thank you so much for watching my video and this tutorial. This banana it takes me 2 hours. Yes, it takes me 2 hours. So for me, it's not a 1 hour project. For me, it's 2 hour project. As I'm a slow crocheter and I tried my best with the yarn, but yes, yarn खत्म हो गया था, तो मुझे एक्स्ट्रा yarn दूसरा ऐड करना पड़ा और मेजरमेंट्स में भी एक्स्ट्रा ही रखना होता है, तो मैंने एक्स्ट्रा रखा ताकि इसका साइज वॉश होने के बाद छोटा ना हो जाए। सो मेरे लिए 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का प्रोजेक्ट है, 2 आवर का प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए। सो yeah, that's it, and it is beautiful and I hope you like this. If you like or not, please like. If you like my video, please like it and share it with your friends, family, and subscribe to my channel. Press the bell icon and press the bell icon for my upcoming videos. I hope I will make more of the vlogs. So yeah, thank you for watching my vlogs. Have a nice day. So I can't wait, and I tried it on myself and it looks cute on me, I know. And I think now I'm keeping it and make another for her. Yes, I'm gonna keep this because it is cute. Look, it looks beautiful and I love it. And I'm not giving this to her, I'm keeping it. Wow, it is. So I can't wait and I wear it and it looks beautiful. I like it. I do. And I'm not gonna give it to her. I'm gonna keep it to myself and we'll make another for her. Yes, for sure. I will. Okay, thank you for watching my video. Please do like, share, and subscribe to my channel. And I hope you like my video. Thank you. Have a nice day. I was kidding. Not gonna keep this to myself. It's for her, so I give this to her. Yes. Okay. Bye.